अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफ रिएक्शंस। तो दिस इज उसामा, दिस इज सानिया, दिस इज उमर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक दो फिर से एक मजे की वीडियो लेके आपके सामने हम लोग हाजिर हो चुके हैं। तो उमर भाई आज हम किस पे वीडियो बनाने के बिल्कुल, आज की जो वीडियो है, जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश गारमेंट्स में जो है सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में आता है और बहुत ज़्यादा वो फेमस है जी गारमेंट्स को लेके। तो आज हम वहाँ का HM ब्रांड है कोई और वो देखने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या दिखाते हैं इस वीडियो में, उस फैक्ट्री में कैसे बनती हैं चीज़ें। तो ये आज हम वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और पहले हम वीडियो देखेंगे, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे कि वीडियो में क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, पहुंचते रहें। सो लेट्स वॉच द वीडियो, स्टे विद अस। हैवी गो। H&M wants to make a positive contribution to the world. As a long-term buyer in the textile industry and seller in many markets, H&M contributes to international trade. Trade is particularly important for developing countries to take part in, as the jobs, growth and development it brings help lift people out of poverty. The textile industry is, according to the United Nations Development Programme, an industry well suited to create such progress. Textile is one of the key economic sectors for us in Bangladesh because it brings almost 80% of our foreign currency and employs more than 4 million people employees. H&M has been a great partner for us in our initiatives towards sustainability and growth. The majority of the people working in the textile industry in Bangladesh today are women. UN Women states that promoting women's access to economic opportunities contributes to gender equality. 5.5 বছর ধরে এখানে কাজ করছি। আমি যখন গ্রামের বাড়িতে আসছি তখন আমি গরিব ছিলাম, এখানে হেল্পার হিসাবে ঢুকছি, পরে প্রমোশন পেয়ে অপারেটর হিসাবে বেতন পাচ্ছি। পরে আমার এই যে সুন্দর আরো আমার জীবন পাল্টে গেল। আমার ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়ালেখা করাচ্ছি আর আমার ছেলে চাই সে ডাক্তার হবে। This has an impact on overall labour productivity in the economy and on children's health and well-being within the family, and hence the well-being of the next generation. H&M doesn't own any factories but works with independent suppliers who all have to meet H&M's sustainability commitment and code of ethics. In 2015, we did over 3,500 audits and assessments in our suppliers' factories. All 265 manufacturing factories in Bangladesh producing for us has undergone the Accord, building and safety inspections. H&M also provide training on workers' rights to worker and management. 80% of all our suppliers' factories in Bangladesh have so far participated. Moreover, H&M helps suppliers establish democratically elected workplace committees and improve the dialogue between management and employees. We want to contribute to improvements for the people working in the clothing industry in Bangladesh, and that's why since many years back we have invested a lot of resources to improve the Bangladeshi textile industry. And to take responsibility is a very important part in the total customer offering for us. When it comes to the workers' wages, our standpoint is clear, and that is that we support the workers' demand for higher wages. And during my visit now to Bangladesh, I met with the Prime Minister, Sheikh Hasina, and where we put forward our demand for higher minimum wages and an annual review of the minimum salary. H&M is also working to ensure that its own purchasing practices enable suppliers to meet H&M's sustainability standards. For example, by striving to provide long-term business relation, reasonable lead times, fair pricing, timely payments, and transparent communication. H&M works for fair living wages, being paid by all suppliers across the entire textile industry. H&M is the first fashion company to have developed a global strategy for a fair living wage, being paid by all our commercial goods supplier. One important part of the strategy is implementing a fair wage method,
which was first piloted in a small number of selected suppliers' factories. The result was positive, and the method is now scaled up to a bigger amount of strategic suppliers' factories in several of our sourcing market. Skills development is key for workers to increase their wages. Providing skills training is part of the work to strengthen workers and help develop the textile industry. H&M started its training center in 1999 to train the helpers and fresh people and to make sure that they get skills and work as operators in the factory. The way I see H&M, they're committed to continue this. H&M has been a great strategic partner supporting us in all the positive initiatives. And not only in Bangladesh, H&M also partnered with us in our work in Vietnam and Cambodia in our Better Work program. H&M welcomes more partnerships and is hopeful that by joining forces, it can contribute to long-term positive development in the textile industry. For more information about H&M's social sustainability work in the supply chain, please visit hm.com/conscious. जी बड़ी जबरदस्त वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी यार। और टेक्सटाइल में बांग्लादेश वैसे ही बहुत ऊपर है और उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अब H&M जो है ब्रांड है और उसने 1999 में जो है अपना जो है स्टार्ट किया सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, और उन्होंने फ्रेश लोगों को जो है वो हायर किया और फिर लोगों को काम सिखाया और आज वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि और 4 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके। 4 मिलियन एम्प्लॉयज़ बहुत बड़ी बात है और माशाल्लाह से उनको एक मतलब यार आपके साथ 4 मिलियन जो है फैमिलीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और उनको इस तरह टेक्सटाइल में तरक्की के साथ साथ बांग्लादेश ने लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया और लोगों को रोज़गार मिला। और बहुत से अब एक उसमें इंटरव्यूज़ भी थे, एक फीमेल जो कह रही थी कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो उस वक्त जो थी बिल्कुल भी मतलब बहुत वो हालात बहुत बुरे थे और फिर जब यहाँ पे आए फिर प्रमोट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जो माली हालात हैं वो भी बेहतर होते चले गए और बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जाने लग गए। तो ये बड़ा एक अच्छी बात है कि लोगों को जो है रोज़गार मिला है इस ब्रांड के ज़रिए, टेक्सटाइल के ज़रिए। याद होगा कि एक वीडियो हमने देखी थी, उसमें उन्होंने यही बताया था कि इस तरह मतलब जो इनके जो ब्रांड है इसमें ज्यादातर औरतों को इन्होंने वर्क, हाँ बिल्कुल ये सच है और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे ख्याल से कोई मुल्क में इस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं किसी को फीमेल को मतलब जितने बहुत मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फीमेल्स को जो है वो जॉब्स दी हुई हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने घर में मतलब अपने हस्बैंड या अपने भाई के साथ मिलके जो है वो चलती हैं और वो एक मेहनत करते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, तो लोगों मेहनत करके। तो सारिया क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो लेडीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। अच्छी बात है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है क्योंकि ज्यादा जो लेडीज है ना वो ये वाला टैलेंट उनमें बहुत ज्यादा होता है और जितना अच्छा ये लेडीज काम कर सकती है ना उतना अच्छे जेंट्स नहीं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको इतना मतलब सपोर्ट की है यार और तभी तो बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल में सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल में आता है ये, और जो कि बड़ी अच्छी बात है बांग्लादेश के लिए और बड़ी जबरदस्त है उनकी इकोनॉमी के लिए और लोगों के लिए, लोगों को रोजगार मिलता है जो अपनी पब्लिक के लिए सोचती है। बिल्कुल। तो ये थी जी गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद है गाइज आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।